completed the project still तुमने अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है स्टिल आ गया स्टिल देखते सस्पेंस दिमाग में घंटी बजनी चाहिए येट और स्टिल तो देखो नेगेटिव है तो वैसे भी येट आएगा और येट का दूसरा पॉइंट है कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो नेगेटिव में भी आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में भी आ रहा है मेरे दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है जी बहुत बढ़िया
इसका एक एग्जांपल लिख देती हूँ। हो रहा था जब कॉन्टिन्यूअस सेंस देगा तो एक्शन आईएनजी में ही आएगा और मोस्टली आईएनजी है तो या तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट या तो पास्ट। मोस्टली जो बात की जा रही है वो पास्ट क्योंकि कोई कार्य उस टाइम पे हो रहा था मोस्टली, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद है मोस्टली, बट एक्शन को भी आप ऐसे लिखेंगे कि आईएनजी में रहेगा। बाद में भी चलता है जब हमारा सत्र खत्म हो जाता है, क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक वर्ड यहाँ पर ध्यान दिया, कौन सा वर्ड यहाँ पर दिया? यहाँ पर दिया कि शिक्षण के दौरान आप लोगों ने वर्ड सुना कि जब हम बच्चों को चीजें सिखाते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, सीखने के दौरान आपसे कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन पूछने के बाद मैं देखूंगा कि आप लोग कितना आंसर दे, तो कितना आपके सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी आपकी गतिविधि आ जाएगी वो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड गतिविधि आपकी देख लो। जो बच्चा गलती कर रहा है उसको आप समझा सकते हो, एक्टिविटी के माध्यम से समझा सकते हो, ये वाला काम मत करना, तूने गलती करी है, जा घर से 100 बार लिख कर लाएगा, इस प्रकार की चीज आपको नहीं करनी, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर बच्चा गेम खेलता है, खेलकूद खेलता है, तो वो भी आपकी किसके अंदर हो जाएगी, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर।